Jai Shri Ram. Let's get started with the multi-time frame analysis of Nifty. I'll be conducting the entire analysis in English. Thereafter, I'll conduct the same analysis in Hindi. So let's get started with the monthly time frame charts of Nifty. So what we have seen is there is a tiny November and December was a very strong bullish months, and we in that analysis or in the month of January first week itself we have mentioned that whenever that happens, whenever there is a strong bullish move in the month of November and December, January usually becomes a profit booking month. And so far we have seen that in case of Nifty, although Bank Nifty, in case of Bank Nifty, it is much more severe than Nifty. So in Nifty, what we can see is there is some sort of a selling pressure from the higher levels. So above 21,571 is what we are like Nifty is trying to Nifty is facing difficulty to try and sustain above this 21,500 level. So on the monthly time frame, however, higher high, higher lows are still in intact. So people who are investors and who are doing their SIPs, they have to just don't worry about anything that market is doing right now. So this analysis would be predominantly for traders and basically option writers who, or maybe option buyers who look into the, who trade into the weekly trading, basically weekly expiry of Nifty. Now remember, for Nifty, this week would be a monthly expiry in case of Nifty, but in case of Bank Nifty, it's going to be just the weekly expiry, and I'll explain you in a just why it is so. So, as per the notification of NSE, every Wednesday would be Bank Nifty expiry, no matter where the month ends, or and so on and so forth. So, in that case, 31st would be the monthly expiry for Bank Nifty. However, for Nifty, 25th is the monthly expiry, because 1st of February, which would be our budget day as well, that would be the weekly analysis for Nifty. So please keep that in mind. So for Nifty, we are dealing with monthly expiry, and this monthly expiry week is a truncated week for Nifty because we have only 3 trading sessions for this week, which is Tuesday, Wednesday, and Thursday. So on monthly time frame, we have seen some sort of a profit booking at higher levels. Now let's go and check on the weekly time frame. So, if you remember, the easiest hack that we have explained when to ensure that the top has formed is whenever you find the first thing needs to happen, that on the weekly time frame, first red candle needs to be formed, and the second thing is the next candle should be a red candle, but it should break the low of the previous red candle. So essentially, I'll show you here. This was the red candle. The next candle broke the low of this red candle. This was the red candle. The next candle broke the low of this candle. Red candle broke the low of this candle. So you can go and check on your own as well uh, whether this particular funda works or not. So so far we have just got the first red candle. So we need another red candle which breaks the low of this candle for the upcoming week. Only then we can say intermediate top for Nifty is also done. I'll just so far what we are like, Nifty did try to come down, but it is still holding up this level of 21,300 zones. So a weekly time frame is still not that bearish as of yet, because Nifty is still holding up. Also because Bank Nifty, I mean the because of HDFC Bank, actually the sentiments on the banking segment spoiled a lot than Nifty, and I guess IT sectors and Reliance actually helped helped Nifty to stay stable. Go and check daily. Okay, so in case of daily, yeah, in case of daily, there are two things. I'll explain both of it. See, there was this small rectangle that was going on, and that rectangle gave some breakout on this day. I'll show you properly. This was the rectangle, and that rectangle gave a breakout on this day, which was 12th of January. But can you see it again came back into the range? And what did we see was a break of this particular rising channel. This is a breakdown of this rising channel. A lot of people keep commenting, how do you come up with targets? Just
take the distance. What is it? It is 657 points. So roughly it would be 325 points. 325 points would be the first half target. Another 325 points, which is the entire from this range, would be 657 points, which would be this level. So these are the two targets as per our uh, breakdown of this particular channel. Now, on the daily, this was the Saturday session. What has happened? Let's understand that. First, draw this level. Yeah. So this was the level where market took support. Okay, when from this up move, market took support from at this juncture and made a fresh high. And market failed to close below this level on any single day so far. Can you see the closing is a tad above this particular low? So unless this level gets totally taken out, which is 21,448, we can take a round figure of 21,450, or you can also, if you want to like wait for serious confirmation, because there is so many times it so happens that it just breaks and then again comes back into the range. If that is the case, then you can wait for 21,400 as well. The moment it breaks 21,450, then we can see some more downside. Now let's go and check on the 15-minute time frame. Although in daily, unless this high is taken out, which is 21,850, looks like even Nifty is going to face some pressure on higher levels from sellers, because sellers are dominating. Now let's go and check on the 15-minute time frame. 15-minute time frame, it's very easy. Just this was my daily trend line. So I'm just, what did I do? So far the price actions is such that 21,550 looks like a very immediate support, and on Saturday market did take immediate support there. However, the volumes were very low, so we would want to check whether on Tuesday this level holds into. So what has changed for Tuesday? Basically, Nifty will give its reaction to ICICI Bank results, and which so ICICI Bank delivered a strong set of numbers. So we need to see tomorrow, which is Monday, on like in the US market, we need to see how ICICI Bank ADR is performing. So the second support is this one, which is 450, 460. And if you guys remember, this is what we were talking about in daily also. If we get a closing below this level, only then we will clearly try to do sell on rise. Unless then, what we are trying to do is, because we have seen some sort of a support here, case of Nifty, at 200, 300 levels. What we are going to plan is, basically we will plan for strangles. Why? Because there is a strong seller here at 21,800, 850, and 21,200, 21,300 has a strong buyer. So till the time market moves within this zone, uh, it's better that like option sellers will try to just sell these two extremes, and if any of the range gets taken out, then they will exit that leg. So let's say if an option seller is selling 21,800, 850, and at the same time he's selling 21,200, 100, the moment it tries to break down on the downside, they'll try to exit the put leg, and then they will roll down the calls. Similarly, if it tries to break on the upside, 800, 850 zone, which looks very unlikely though, then that's how they are going to plan. Although, as I said, it doesn't look very convincing that prices are going to take out on the 21,800, 850 levels for this particular expiry. But let's see if at all the price action says so. So we have clear resistance on the 700, 720 till 750 zones. So from there we might see some rejection again. So if at all tomorrow we open with a gap up, important thing to look at is, whenever I say gap up, it would be somewhere around 640, 650 range. So the moment we open with a gap up, we need to sustain above 720 somehow to reach up till 800 levels. The moment, if at all that happens, and if I see some negative price action at 800, 850 levels, I would be more than willing to go short with a small SL, because the risk reward for the short would be better. Now, why I'm saying this? See, there was this sharp downfall
and equal sharp recovery as well. Like within just 1.5 day, this recovery have has also happened. So that's the reason what we can see is it's basically seller is somewhere here and the buyer is somewhere here, right? So within that range, the range is too big and the volatility and the choppiness will keep continuing. These kind of candles are very brutal, wherein you see a sharp down move, and the very next candle just reverses the entire price action of that red candle. So, and if at all we open with a gap down somewhere in the range below 21,600, then we will see whether market forms a range here, and if it tries to break down, then we will plan for 400-450 levels. So and if it opens flat, then again, unless this high or 21,500 or 21,720 is taken out, till then we will just play sideways. I can't see much option buying options for buyers. Like for big targets, scalping can always be done. For big targets, you have to wait for this level to be taken out, or at least what you have to do, wait for a daily closing candle below 450 levels. Only then you can, initiate a strong buying on the put side, of course, if it breaks below this level. तो दैट्स अबाउट इट फॉर निफ्टी. तो हिंदी में शुरुआत करती हूँ मैं. तो जैसे मंथली में चलते, पहले तो मंथली में हमने क्या देखा है कि डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आ गई है. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था जनवरी के फर्स्ट वीक वीडियो में, कि जब जब नवंबर और दिसंबर मंथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश रही है, उसके बाद एक यूजुअली एक प्रॉफिट बुकिंग मंथ आती है जनवरी. और इस बार भी हमने वो देखा है. बट प्रॉफिट बुकिंग जो निफ्टी की है वो इतनी सीवियर नहीं है जितनी बैंक निफ्टी की हुई है. तो पहले तो हमको ट्यूसडे को क्या रिएक्शन मिलने वाला है, निफ्टी का रिएक्शन आने वाला है आईसीआईसीआई बैंक पर भी. आईसीआईसीआई बैंक का रिएक्शन हमको फर्स्ट पहले कल की मार्केट में, कल जब यूएस मार्केट ओपन होगी, तो हमको वहां पर की एडीआर की रिएक्शन से हमको थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है. एंड मैं डेफिनेटली उसके बाद चार्ट्स पोस्ट करूंगी, या कुछ अगर मेरा अपडेट होगा तो मैं ट्विटर में ज़रूर पोस्ट करूंगी. तो अगर आप ट्विटर पे मेरे को फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़, मतलब अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ डू फॉलो, बिकॉज आई विल पुट द अपडेट ओवर देयर. और तो ये मंथली में इतना नेगेटिव नहीं लग रहा है, बट एट द सेम टाइम ये दिसंबर की जो हाई है उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है. इसका मतलब सेलर्स का प्रेशर बिल्कुल है ऊपर के लेवल से. अब चलते हम डेली सॉरी वीकली के टाइम फ्रेम पे. वीकली के टाइम फ्रेम में हमने बताया था एक सिंपल फंडा आपको याद रखना है. जब भी टॉप बनना है, अगर वीकली में टॉप बनना है, उसको आप कैसे पहचानोगे? पहले तो हमको 2 स्टेप करना है उसके लिए. पहला स्टेप ये होना चाहिए कि वीकली की कैंडल रेड होनी चाहिए. दूसरी स्टेप ये है कि वो दूसरी जो कैंडल बनेगी वो पहली वाली रेड कैंडल के लो को ब्रेक करे. मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये कैंडल्स को दिखा सकती हूँ. ये एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हुई, सॉरी, ये एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हुई है, और बिल्कुल उसके लो को काटा है ये सेकेंड रेड कैंडल ने. इसका मतलब ये एक टॉप हो चुका है. ये फर्स्ट रेड कैंडल और इसकी लो को ब्रेक किया, ये सेकेंड रेड कैंडल. फर्स्ट रेड कैंडल, सेकेंड रेड कैंडल ने इसकी लो को ब्रेक किया. ऐसे आपको कई एग्जाम्पल्स मिलेंगे, आप खुद जाके भी ये देख सकते हैं. ठीक है. अभी तक हमको ये सेकेंड स्टेप के लिए वेट करना पड़ेगा, विच वुड बी दैट डिसाइसिव वीक. ये वीक हो सकती है, और ये वीक में हमें सिर्फ तीन ट्रेडिंग सेशंस है. अब चलते हैं, हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे. डेली टाइम फ्रेम पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक जो चैनल ड्रॉ की थी, जहाँ पर मार्केट ने 4 दफा ये सपोर्ट लिया था, 1, 2, 3, 4. उसको फाइनली मार्केट ने ब्रेक कर दिया था इसी दिन. ठीक है. बट क्या हुआ है, ये जो लेवल है ना, जैसे मार्केट ऊपर जा रही थी उसके बाद एक पुल बैक दिया था, और ये जो लो था तकरीबन 448-450 की, उसके बाद मार्केट एक नई हाई बनाई. और उसके बाद जब ये ब्रेक किया, तो ये कैंडल ने उसके नीचे की क्लोजिंग नहीं दी. तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है कि जिस भी दिन निफ्टी में 21,450 के नीचे की क्लोजिंग आएगी डेली बेसिस पे, तब हमको लगेगा कि क्लियर कट वापस ये, अब मतलब इसको सेल ही करना है, मतलब ये क्लैरिटी मिल जाएगी हमें. उसके बाद हम देखते हैं कि आप लोग मेरे को पूछते हो कि कैसे इसको टारगेट्स को निकालना है. बड़ा सिंपल है, ये आप निकालो ये मेजरिंग पॉइंट, और यहाँ पर से मैं इसको हटा रही हूँ. यहाँ से यहाँ पर आप मेजर करो, जितने की बारी है 623 पॉइंट से, उसको मैं यहाँ पर प्लॉट करती हूँ. मैं 623 को डिवाइड बाय 2 करती हूँ, फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट में डिवाइड करती हूँ. यही करती हूँ मैं, और दूसरा कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ठीक है. ये हो गया है हमारा डेली का
चार्ट, बट डेली में क्या दिख रहा है कि अभी कहाँ ना कहाँ मार्केट बेसिकली ये जो सेलिंग आई है और ये जो बाइंग आई है इसके बीच में घूम रही है। ये डेली में भी दिखेगी और आपको 15 मिनट में भी दिखेगी। और 15 मिनट में हमको ये दिख रहा है इसमें कि सेलर्स यहाँ पर बहुत है, सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं 21,800 21,850 पे, और बायर्स 21,200 21,300 के आसपास डोमिनेट कर रहे हैं। और मार्केट बिल्कुल उसके बीचों बीच है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये फाइटिंग जोन है। तो यहाँ पर क्या वर्क करता है, यूजुअली शॉर्ट स्ट्रैंगल वर्क करता है। आई एम टॉकिंग फ्रॉम द, मैं ये ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, ठीक है। ऑप्शन बाइंग अगर आप देखोगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो आप ऑप्शन बाइंग अभी के लिए आप यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हो, या तो फिर मतलब ये सबसे बेस्ट अगर आप ब्रेकडाउन के लिए प्ले कर रहे हो तो, या तो फिर एटलीस्ट आपको 21,450 के नीचे डेली क्लोजिंग के लिए वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप इनिशिएट कर सकते हो आपके ऑप्शन बाइंग वाली स्ट्रैटेजीज। उसके दौरान अगर आप करोगे तो ये वाली जो वॉलेटिलिटी है इसमें आप बहुत मार पड़ेगी इसमें। तो ऑप्शन सेलिंग में क्या है, लोगों को ये पता है कि मतलब ये एक रेंज है जहाँ पर 800 850 नहीं टूटेगी ये मंथली एक्सपायरी में। और ये 21,200 या 300 टूटेगी या नहीं ये मुझे नहीं पता ये मंथली एक्सपायरी में, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी कॉशियस डाउन साइड पे हूँ, ठीक है। अब कल समझते हैं कि लेट्स से कि कल मतलब ट्यूसडे ट्यूसडे इफ मार्केट अगर गैप अप से ओपन होती है विच इज 600 640, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, हम जब तक ये हाई या ये लो नहीं कटता है तब तक हमें बस वेट करना है। लेट्स से मार्केट काफी ऊपर के लेवल पे खुलती है विच वुड बी अबाउ 680, अगर उसके ऊपर खुल जाती है और तब बहुत ही ऐसे टाइट रेंज बनाती है और फिर ब्रेक करती है 720 को, अगर ये ब्रेक करती है तो फिर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ मार्केट एटलीस्ट 800 तक, 800 लेवल तक जाएगी। बट जैसे ही वहां पर जाएगी और वहां पर मेरे को अगर एक भी नेगेटिव प्राइस एक्शन मिल गया तो फिर मैं यहाँ पर से शॉर्ट करने के लिए मतलब इनिशिएट करूंगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड फॉर द शॉर्ट्स इज बेटर। वाई? बिकॉज मार्केट देखो शार्पली डाउन आया है और शार्पली फिर ऑलमोस्ट रिकवर भी कर गया है, तो वैसे टाइम पे मैं उसको शॉर्ट करूंगी और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलर प्रेजेंट है। अब मान लीजिएगा कि मार्केट गैप डाउन खुलती है विच इज बिलो 21,580 के नीचे, और मार्केट यहाँ पर एक छोटी सी रेंज बनाती है और नीचे की तरफ आती है, तो फिर मैं वापस शॉर्ट करूंगी। बट यहाँ पर मार्केट हाई चांसेस है कल मतलब ट्यूसडे फिर मार्केट यहाँ पर एक बार तो जरूर सपोर्ट लेगी। तो ये थी हमारी एनालिसिस फॉर निफ्टी। आई होप आपको कुछ नया सीखने मिला होगा हमारी निफ्टी के एनालिसिस में। और अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो प्लीज़ डू कमेंट और हमें बताइए हम और क्या नई चीज़ आपके लिए ला सकते हैं। टिल देन जय श्री राम।